Assalamu alaikum students, hope you are safe and in a good health. In our today's lecture, we are going to study the remaining part of the chapter. In our previous lecture, we have studied the Covenants chapter number 1 and the chapter number 2 half. Now we are going to study page number 10, English literature book page number 10. Let's start it. I must get help, said Nicodemus to himself. Nicodemus ने अपने आप से कहा कि मुझे जल्दी से किसी मदद की ज़रूरत है. And he began groping मीन होता है टटोलना किसी चीज़ को, ठीक है. And he went groping around the blackness to find another way out. और उसने अंधेरे में ना टटोलना शुरू कर दिया कि इसको कोई और रास्ता मिल जाए जहाँ से वो बाहर निकल जाए. When he found it, जैसे ही उसको वो मिला, however his heart sank. वो अलग बात है कि उसका दिल डूबा. उसको रास्ता मिल तो गया लेकिन उसका दिल डूबना शुरू हो गया. तो ओनली एग्जिट अपेयर टू बी अ नैरो गैप. जो वहाँ से एक ही बाहर निकलने का रास्ता था वो बिल्कुल एक छोटा सा जो है ना सुराख सा था, ठीक है. डाउन बाय द फ्लोर, नो मोर देन अ फुट हाई. सिर्फ 1 फुट हाई के करीब वो एक रास्ता था जो जहाँ से वो निकल सकता था. वो बिल्कुल छोटा सा एक सुराख था. आई कांट स्क्रीम थ्रू दैट इन द पिच डार्क. स्क्रीम का मतलब होता है बल खाना. वो कहता है कि मैं इस जो है ना अंधेरे से जो है ना बल खाता हुआ नहीं उतर सकता क्योंकि वो इतना छोटा सा सुराख था. वो कहता है कि मैं इधर से कैसे उतरूँगा. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, यानी खुद ही इसने सोचा. बट एट दैट वेरी मोमेंट ही हर्ड रोजीज चीयरफुल वॉइस सेइंग यू कैन डू इट. लेकिन उसी लम्हे उसको रोज़ी की आवाज़ आई जो कि उसको कह रही थी कि तुम ये कर सकते हो. निकोडेमस पैन्ड राउंड एंड देयर. वो उसी दौरान ये जल्दी से मुड़ा. एंड देन और फिर टू हिज इमेंस सरप्राइज, उसे बहुत ज़्यादा मतलब हैरत हुई, ठीक है. वॉज नथिंग, नो रोज़ी, नो एनीबॉडी. उसे बहुत हैरत हुई ये देख के कि वहाँ पे कोई भी नहीं था. ना वहाँ रोज़ी थी और ना वहाँ कोई और था, लेकिन उसको आवाज़ तो आई थी. बट आई डोंट नो इफ़ इट लीड्स एनीवेयर. लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाता है. कहीं जाता भी है या नहीं जाता, हो सकता है ये वैसे ही एक सुराख हो. ही सेड टू द वॉइस इन हिज हेड. वो अपने आप से ही बात कर रहा था, ठीक है. अपने माइंड में वो अपने आप से इस टाइम बात कर रहा था. एंड इट्स सच अ टाइट स्क्वीज आई माइट गेट स्टक. अब वो कहता है कि वो इतना छोटा सा सुराख है कि हो सकता है मैं इसमें फंस जाऊँ और ये रास्ता कहीं भी ना जाता हो और फिर मैं इससे निकल भी ना सकूँ. He didn't hear Rosie's voice again. उसको फिर रोज़ी की आवाज़ नहीं आई. But he knew that it would have said. लेकिन उसको पता था वो होती तो वो कहती या उसने कहा होगा. That was how he found himself reeling down a narrow passage of stone in the pitch black. लेकिन उसको यकीन था कि वो उसको उसने ये बात कहनी थी उसको, ठीक है. वहाँ पे रोज़ी नहीं थी और उसको रोज़ी की आवाज़ भी नहीं आ रही, लेकिन उसको यकीन था कि अगर रोज़ी वहाँ होती तो वो ये कहती कि वो जो है ना कोशिश करे इस बारे में, ठीक है. एंड दैट वॉज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ रीलिंग डाउन अ नैरो पैसेज ऑफ स्टोन इन द पिच ब्लैक. ही स्क्रीम्ड, बलखाना मैंने भी आपको बताया. एंड ही wriggled there in the black for a long time and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. अब उसको पता था कि वहाँ रोज़ी की आवाज़ को दोबारा नहीं आई, लेकिन रोज़ी अगर वहाँ होती तो वो उसको कहती कि तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना चाहिए. जैसे ही उसने ये बात सोची वो उस जो भी गैप था उसमें उतर गया, ठीक है. और वो मतलब अपने आप को वो बल खाता हुआ लाइक वो टर्न करता हुआ मुसलसल नीचे की तरफ उतरने की कोशिश कर रहा था. और जैसे जैसे वो नीचे उतरता जा रहा था वो जो भी सुरंग सी बनी हुई थी, वो जो भी सुराख था, वो मज़ीद उसमें मज़ीद अंधेरा होता जा रहा था और मज़ीद तंग होता जा रहा था, ठीक है. आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ. बट ही डिडंट. लेकिन वो वापस नहीं गया. ही जस्ट कीप रीलिंग एंड स्क्विमिंग अंटिल सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप. वो अब अपने आप को ना लाइक अगर आपने कभी देखा हो कि जिस तरह से सांप रेंगते हुए जा रहे होते हैं ना, तो वो उस तरह से अपने आप को लाइक सीखता वो सुरंग से निकाल रहा था. और फिर एक वक्त के लिए उसने सोचा कि मैं वापस चल जा रहा हूँ, कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो वापस नहीं गया, ठीक है. और फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आ गया कि चलते 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 जो है सुरंग से वो बाहर निकल गया और वो खड़ा हो गया. मतलब उसको जगह मिल गई खड़े होने की. Long time and the tunnel got okay. So we have done this. Oh, he said, although what he really meant was thank goodness. वो जैसे ही इस सुरंग से बाहर निकला और बाहर निकल के खड़ा हो गया, उसको पता था वो कितनी मुश्किल से निकला है. और उसने कहा कि ओ मतलब
ओ उसने कहा, लेकिन उसका मतलब था कि शुक्र है अल्लाह का कि मैं निकल आया हूँ बाहर, ठीक है। ही बिगन टू क्लेम एंड ही वाज स्टिल क्लेम्बिंग सम मिनट्स लेटर। वो उसने जो है ना चढ़ना शुरू किया, और कुछ मिनट्स तक जो है ना वो चढ़ता ही गया, ऊपर की तरफ चढ़ता ही गया। इट मस्ट बी अ टावर, ये यकीनन कोई टावर होगा, ही थॉट, उसने सोचा। और द ग्रैंडेस्ट हाउस इन द वैंस, या फिर ये कोई बहुत बड़ा घर होगा। बट एट द वेरी मोमेंट ही सॉ अ क्रैक ऑफ लाइट, लेकिन उसी वक्त उसको जो है ना बिजली बिजली पड़ने की आवाज़ आई, ठीक है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग अ कैच दैट क्लिक सॉफ्टली इन द डार्क। A panel suddenly slid open and Cognis stepped through in the most amazing room he had ever seen. फिर क्या हुआ, एकदम से उसको एक आवाज़ आई, जैसे बिजली से पड़ने की आवाज़ आई या खुलने की आवाज़ आई। और वो उसने जो है ना वो चलता गया, उसे अपने हाथों को स्ट्रेच किया, ठीक है, और चलता गया उस अंधेरे में ही, आराम आराम से चलता गया, ठीक है। और अचानक क्या हुआ कि एक ढक्कन खुला, ठीक है। ढक्कन वो चढ़ रहा था ना, देखिए वो जो सुरंग थी उससे गुजर के आ गया, और फिर उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, और वो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। और फिर क्या हुआ, उसने जिस टाइम ढक्कन हटाया तो उसने एकदम से देखा कि वो एक इंतहाई खूबसूरत कमरे में था, और वो उस तरह का कमरा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा हुआ था, ठीक है। फाइनली वो पहुंच गया वहाँ तक। ओके, write the lines of speech below. Put the name of the speaker after each one. Aha, I've got you now. Who said this? Aha, I've got you now. The man. When the communist was running, he said that. Sorry, when the communist was running and the man was running behind him, then he said that at some point that he said that, aha, I got you now. And then, the man crashed. Let's put up every single weed on your doorstep. Rosie said that. It's one of the best ideas I've ever had. Rosie said this. Oh, Nicobinus said this when he said, thank goodness. Open this door at once. Did you hear? The man said. The man said, open this door at once, because he said that once you have to open this door, so open it now. Because the man said that if the Nicobinus, will not open the door, then the man have to broke this door and then he have to mend it by himself. So he said that open the door once. You'll think of something. Rosie said that you'll think of something. Okay, now we are going to do the question answers, or first part, which is answer the following question. I'm going to explain all the answers in this video verbally, and then I'm going to upload it in the WhatsApp group so you can copy it on the notebook. What do we learn about Nicodemus in the first paragraph? We learned that Nicodemus is an extraordinary child who stuck his tongue out at the Prime Minister. We also learned that he lives in Venice and that he could do anything. Who is Rosie? Rosie is Nicodemus' best friend. Why don't people pay attention to what Rosie's saying? People don't pay attention to what Rosie's saying because she is always having wild ideas. What two things does Rosie suggest that she and Nicodemus should do? Rosie suggests that she and Nicodemus should pull up every week on his doorstep and discover the land of dragons. What do the children go? When do the children go on their adventure, and what do they take with them? The children go on their adventure the next morning when it's just starting to get brighter. They take buns and lemonade with them. What who do they meet on their journey? Say what happens at each of the two encounters. They meet the night watchman and a dog on their journey. The night watchman tries to stop them from going on their adventures. Rosie trips over the dog and it barks at them until it notices the buns and starts to eat them. How does Nicodemus escape from the man in orchard? Nicodemus escaped from the man in the orchard by doubling himself up and going backward as fast as he could. Instead of trying to run away, so the man's legs are knocked from under him and he lands in a pile of leaves, then he hides in a shed. How does Nicodemus get off the well?
He screamed through a long, narrow passage made of stone. Okay, this is it for today. We'll discuss further in the next lecture. I'm going to upload all the written work in the WhatsApp group. If you have any question regarding to this chapter, you can ask me on WhatsApp. Till then, stay safe, stay healthy, take care, Allah Hafiz.